Hello guys, this is Suyash Goyal signing in and I hope that you all are doing very well. Just a minute guys. Okay, everyone out there guys, can you hear me? This is Suyash Goyal signing in and I wish you all a very good evening and a very happy Friday to all of you. Today we're going to talk about a very important topic and I would say one of the most important topic of your class 10th and one of the most important topic of your entire mathematics, and the topic is none other than what topics that we are going to discuss today is trigonometry. So please tell me once you are there. Okay, just a minute guys. So this is what we're going to discuss today, all of you. Once you are there guys, please tell me, everyone out there, once you are there, please tell me that you are there so that we can begin with our discussion. Okay, let me just refresh it once so that I can see if you have joined or not. Right now, I cannot see anyone joining us, I guess. Okay. Okay, guys, so this is the topic that we are going to talk about. This is the topic that we are going to discuss about trigonometry. So basically, in today's session, we will be talking about concepts based on trigonometry on the basis of our NCERT curriculum. Whatever mentioned in our NCERT, we will be talking about the concept mentioned in NCERT. We will be talking about the questions, the examples mentioned in NCERT. So I would like to proceed with that. But before that, I would like to tell you something about our Unacademy portal. So guys, right now we are on Unacademy YouTube channel. Okay, so here you can attend all the classes on YouTube, but if you want to have a continuous learning, okay, if you want to have a continuous learning, if you want to attend the classes every day with respect to your class 10th curriculum, or with respect to your class 9th curriculum, or with respect to your class 11th or 12th curriculum, may it be any subject, it could be mathematics, or it could be science, or it could be in specific physics, chemistry, bio, or it could be SST, your social science, it could be Hindi as well, maths as well. Every subject is covered on Unacademy. You just need to download Unacademy Learning app, and once you download that, you just need to select your category, and then there will be so many live classes, so many special classes that are waiting for you. You can attend all those classes and you can actually learn a lot of things about your particular subject. Okay, in this session guys, we will be talking about trigonometry and we will be doing questions based on it. Moving forward, let me tell you something about myself, about Unacademy Plus platform, what we have for you actually. So many of you already know me. All those who do not know me guys, my name is Suyash Goyal and I have more than 98,000 followers on Unacademy. I have been teaching mathematics on Unacademy for class 9, 10th, 11th and 12th. Earlier I was into 11th and 12th, but now I have been teaching 9th and 10th as well. This is my referral code everyone. So if any one of you I would say, if you are planning to subscribe to Unacademy Plus, you can use this code SG08, and by using this code you will be able to get flat 10% discount on the subscription charges. Okay, so there is a benefit for all of you. Moving forward guys, what is Unacademy Plus? तो क्वेश्चन ये आता है कि Unacademy Plus है क्या सर, मैं उसका सब्सक्रिप्शन क्यों लूँ? Why should I go for Unacademy Plus? How is it gonna help me? Why should I take it when I have so many free videos available as well? देखो, सिंपल सी बात है गाइज, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, so there are multiple factors. Like we have a factor that we call self study, we have a factor that we call proper guidance, and we have a factor called continuity. Okay, your continuous study. Okay, continuity is very important. Okay, तो Unacademy Plus पर क्या होता है guys? On Unacademy Plus we have continuous classes. Every day we have a class for all the subjects, may it be social science, science, maths, Hindi, English. Every day we have a class. Okay, proper guidance is provided to each and every student. Every student is provided proper guidance as part of a curriculum of Unacademy that we follow. Every educator will give you equal importance and will take care of every problem that you might have in the subject or
in your particular standard, that may be 9th, 10th, 11th or 12th. And then ये सब करने के बाद guys you can do self study, और उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस एज वेल, जिसमें कि वी एक्चुअली टेक केयर ऑफ ऑल द डाउट जो भी आपको हो सकते हैं। जो भी हम लोग वीक में पढ़ते हैं उसके लिए वी हैव वीकली क्विजेस, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि जो भी हमारा हुआ है उसमें मेरे को कितना समझ में आया है। एवरी डे वी हैव अ लाइव क्लास, हर सब्जेक्ट के लिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर देयर, test series are there, so everything we have covered you with everything. Okay, we provide you with everything whatever you might need as far as your studies are concerned. Moving forward guys, how many batches are we having? You can yourself see this over here. So a batch already going on, let's crack NCERT. A batch already going on, let's crack NCERT in Hindi. A batch already going on, let's crack grammar for French, English and Hindi. A batch is going on for half yearly examination. A batch is going on for your full syllabus batch for 2021 examination that you will be having. ये सारे बैचेस अभी चल रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का बैच अलग चलता है, फुल सिलेबस का बैच अलग है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का बैच अलग है, सारे लैंग्वेजेस के ग्रामर का बैच अलग है। वी हैव ऑल द बैचेस रनिंग राइट नाउ, okay, and that too in Hindi as well and in English as well. So if you want to join the Hindi batch, you can join Hindi. If you want to join the English batch, you can join English batch. So that depends on you कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है। सारे बैच की अवेलेबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू सी, ये हमारे अपकमिंग बैचेस हैं। फुल सिलेबस बैच एक और आने वाला है, एक और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्रैश कोर्स आने वाला है। कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस बैच सून विल बी देयर, complete NCERT social science batch and previous year question batch soon will be there. So all these are the facilities that are provided to you on an Unacademy learning platform so that you can actually ace your studies. Okay, now talking about the subscription plan guys, so it's a very straight and very simple and very effective plan that we have. Let's say you are in 10th, मान लो अभी आप 10th में हो, तो 10th के स्टूडेंट्स मान लो अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं Unacademy प्लस का, जो कि 1 मंथ हो सकता है या 6 मंथ हो सकता है या 12 मंथ या 24 मंथ या 36 मंथ या 48 मंथ भी हो सकता है। अगर आप 9th में हो तो आप 12 तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नाउ पॉइंट ये है कि मान लो आपने 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, यू टुक द सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ्स। नाउ गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फॉर दीज 12 मंथ्स आप सिर्फ 10th ही नहीं, आप 10th के साथ साथ 11th और 12th के भी सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग इफ यू टेक अप द सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ्स, इफ यू टेक अप द सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ्स फॉर योर क्लास 10th, तो आप 10th के साथ साथ 11th और 12th के भी सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हो उन 12 मंथ्स के लिए। सिमिलरली अगर आप मान लो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो फॉर दो 6 मंथ you will be able to access all the live classes for 10th, 11th, 12th as well for those a period of 6 months. Are we clear about this? Everyone getting my point? What I'm saying? क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को या नहीं? Please tell me quickly, everyone. Come on. Everyone out there, guys, are we clear till this point? You got it? So now this is the process of taking up the subscription. If any one of you who is interested in taking up the subscription, you just need to download the Unacademy learning app over here. You just need to select your category from here. You need to manage goals में जाके आपको वहाँ पे अपना category select करना है, CBSE class 10th या फिर CBSE class 9th अगर आप 9th में हो, या फिर 11th अगर आप 11th में हो, and so as the case with 12th. उसके बाद आपको get subscription पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके you will be redirected to all these options that we have, and from all these options you can pick up any one option. आप जो भी चूज करोगे वो चूज होके आपके पास यहाँ अमाउंट आएगा। there you can mention my code, that is SG08, and वो कोड मेंशन करते ही you will be able to get flat 10% discount on these charges. Am I clear? Hello Pratham Shah, how are you? Cool. So this is the process of taking up the Unacademy Plus subscription. This is all from my side about this, and now let's start with our topic for today. And the topic that we are having is what? I already told you that let's start talking about our trigonometry. Everyone guys, let's focus. So let's talk about trigonometry. Let's see what we have in the plate of trigonometry. सबसे पहले बात करते हैं, I'm doing great Pratham. Please focus over here everyone. So
Guys, when I'm talking about trigonometry, always remember that we talk about trigonometry in terms of what we talked about trigonometry whenever we are talking about triangles. जब भी मैं triangles की बात कर रहा हूँ, whenever I'm talking about triangles, and that too when I'm talking about right angle triangles, okay? When I'm talking about right angle triangle, that is the time when I talk about trigonometry. तो क्लास 10th के अंदर हम लोग सिर्फ उन्हीं ट्राइंगल्स की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो राइट एंगल ट्राइंगल है. जो भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा, जैसे कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके. इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज 90 डिग्री. I'm naming it as A, B, C. So in this triangle, I will talk about my trigonometry or my trigonometric ratios. Are we clear? You got it? Trigonometry होता क्या है guys? So trigonometry is a very interesting branch. Trigonometry helps you in relating. What trigonometry helps you in relating the sides with the angles. So the angles that you are having, this is the angle A and this is the angle C. If you want to find a relationship between the sides, if you want to find a relationship between the sides and the angles, if you want to find the relationship between the sides and the angles of your right angle triangle, okay, of your right angle triangle, that is the time that we say what? That is the time that we say कि हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे trigonometry की. How many of you got this? Am I clear with this everyone or not? Sure Pratham, we will be talking about that soon. अगर आप Unacademy पर हो तो Unacademy पे मैंने ये पहले से ही डिस्कस करके रखा हुआ है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट्स एंड डिस्टेंस हमें करना है तो वो हम लोग बहुत जल्दी करेंगे. ओके, cool guys. So now we are going to start with our trigonometry, and always remember we will be talking about trigonometry when I am having a right angle triangle. Okay, now in this right angle triangle अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोलते थे? बहुत बेसिक सी बात गाइस, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो, ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए बी सी ये है. इफ आई आस्क यू प्रथम, टेल मी दैट हियर, कोई डाउट नहीं है कि हाइपोटेनस मेरा क्या होगा? हाइपोटेनस मेरा ए सी होगा, राइट? बट अगर मैं आपसे पूछूं आपका बेस क्या है इस ट्राइंगल में और आपका परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, क्या आप मुझे बता सकते हो? कुड यू प्लीज टेल मी विच will be the perpendicular and which will be the base? In this triangle I'm talking about, in this triangle, what is the perpendicular and what is the base? What do you think? Which one is base and which one is perpendicular? Come on, think about it, tell me. Okay, so hello Ikaya study, that's your name if I'm not wrong. तो यहाँ पे आप लोग बोल रहे हो कि सर आपका जो बेस होगा वो होगा BC और आपका जो परपेंडिकुलर होगा सर दैट विल बी AB, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग. Always remember guys that whenever I am talking about a right angle triangle, जब भी मैं किसी एक right angle triangle की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो मेरी एक साइड फिक्स होती है वो होता है hypotenuse. Hypotenuse will always be fixed. हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होगी, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होगी वो ही हमेशा मेरी क्या होगी? वो ही हमेशा मेरी hypotenuse होगी. Am I clear with this or not? Every time the side that you have exactly opposite to your 90 degree angle, that side will be considered as your hypotenuse. जहां तक बात आती है बेस और परपेंडिकुलर की, तो गाइस ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये दोनों हो सकते हैं. तो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि अगर आपका बेस जो है, इफ योर बेस इज BC, then your perpendicular will be what? Then your perpendicular will be AB. और अगर आपका बेस जो है वो क्या है, if your base is AB, अब क्योंकि AB बेस हो गया, in that case your perpendicular will be what? In that case your perpendicular will be BC. How many of you got this? किस किस को ये बात समझ में आती है? So always remember from now on that in right angle triangle which side is fixed? Everyone. Hello Vinod, how are you? Hello Shyam. In your right angle triangle only one side is fixed, and that side which is actually fixed is what? That side which is actually fixed is known as what? Is known as your hypotenuse. बस hypotenuse फिक्स्ड होगा, बाकी कोई भी साइड फिक्स नहीं होगी. तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर आ जाओ. देखो
मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज योर ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, बिकॉज ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाला ए सी क्या होगा? आई टोल्ड यू दैट ए सी विल बी हाइपोटेन्यूस, करेक्ट? ए सी इज गोइंग टू बी योर हाइपोटेन्यूस. But guys, now your BC and your AB, they are going to be what? They are going to be perpendicular and base. तो अब कोई सा भी perpendicular हो सकता है, कोई सा भी base हो सकता है. Got it? अगर मैं बोलूं कि BC मेरा perpendicular है तो AB क्या होगा? AB मेरा base होगा. और अगर मैं बोलूं कि BC मेरा base है तो AB क्या होगा? AB मेरा perpendicular होगा. Am I clear with this or not? You got this? Everyone clear? What happened to you, Sham Kumar and maybe Robin? Please do not spam. Spam mat karo, guys. Please don't. Okay? Please don't do this. Are we clear? You got the point, guys? Now, question comes to my mind is that how to decide? How to decide? How to decide that which one is my perpendicular and which one is my base? हाँ जी, समझ में आया? मन नहीं है पढ़ने का यार, पढ़ना तो पड़ेगा, अभी पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ेंगे ना. इट विल बी फन. ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज फन. सुनो जरा ध्यान से. हेलो मणिकांत, हाउ आर यू? हेलो पार्थ, एवरीवन गाइस बताओ मेरे को, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? लेट्स मेक इट कॉन्वर्सेशनल. ओके, आप लोगों को क्या लगता है, कैसे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा बेस क्या होगा और मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा? हाउ कैन आई से दैट विच वन विल बी माई बेस एंड विच वन विल बी माई परपेंडिकुलर? कैसे डिसाइड करोगे? टेल मी. Which one will be your base and which one will be your perpendicular? How will you decide this? Exactly. So guys, always remember कि अब हम लोग जब भी ये right angle triangle की बात करेंगे, whenever we will be talking about a right angle triangle, okay? Whenever we will be talking about a right angle triangle, we will always talk about an angle as well. तो अगर ये मेरा right angle triangle है ABC, okay? और इस ABC में ये आपका 90 डिग्री है फॉर श्योर, और ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया. हमेशा याद रखो गाइज, एवरीवन प्लीज फोकस, एवरीवन प्लीज. नो श्याम, यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज 90 डिग्री वाला देखो ये है. अब 90 डिग्री वाली साइड ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, तो बेस कौन सा हो गया? दोनों ही हो सकते हैं ना बेस. तो हमेशा याद रखो कि जहां पर भी आप अपने एक और एंगल की बात कर रहे हो, अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, अगर आप इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो ये एंगल जहां पर रेस्ट कर रहा है ये हमारा बेस कहलाएगा, और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड जो है ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा. इसी तरीके से अगर इसी टाइप के ट्राइंगल को मैं लूं और दिस इज माय 90 डिग्री, दिस इज माय हाइपोटेन्यूस, दिस इज अगेन माय ए बी एंड सी, और अब अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं तो क्योंकि ये एंगल मेरा इस वाली साइड पर रेस्ट कर रहा है, सो दिस विल बी नोन एज बेस, एंड इसके अपोजिट वाली साइड दिस विल बी नोन एज परपेंडिकुलर. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? किस किस को ये बात समझ में आती है? यानी कि जिस भी एंगल की मैं बात कर रहा हूं, वट एवर एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज 90 डिग्री, दिस विल ऑलवेज रिमेन फर्स्ट, दिस विल ऑलवेज रिमेन फिक्स. इसके अलावा आई विल बी हैविंग टू मोर एंगल्स इन माय ट्राइंगल. वन एंगल विल बी दिस, वन विल बी दिस. इन दोनों एंगल्स में से मैं जिसकी भी बात कर रहा हूं वो एंगल वाली साइड जो है वो आपका बेस होगा, और उसके अलावा जो तीसरी साइड मेरे पास बचेगी दैट विल बी योर परपेंडिकुलर. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? प्लीज मुझे बताओ फटाफट से. Are we clear with this or not? Like guys, you can see over here, okay, itself you can see over here, जब मैं इस triangle की बात कर रहा हूँ, in this triangle you can see I'm having this right angle triangle, yes or no? This is my right angle triangle. In this right angle triangle you can see this is my 90 degree angle, yes or no? This is my 90 degree angle. Now when I'm talking about this 90 degree angle guys, you all can see जब ये मेरा थीटा है, थीटा is any angle, जैसे कि हम लोग वेरिएबल को x मानते हैं ना, कि x मान लो, y मान लो, z मान लो, ऐसे ही जब हम लोग एंगल को मानते हैं, एंगल को एज्यूम करते हैं, तो एंगल को एज्यूम हम लोग इससे करते हैं, ये साइन जीरो बनाओ और इसमें बीच में से कट.
एंड इसको हम लोग बोलते हैं थीटा. इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज थीटा. इसको हम लोग थीटा प्रोनाउंस करते हैं. गॉट इट? तो अगर मैं ये एंगल लेके चल रहा हूं, यानी कि अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं, तो ये मेरा क्या होगा? बेस होगा जहां पे ये एंगल रेस्ट कर रहा है, और ये मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. और अगर मैं इसको थीटा मान के चल रहा हूं, तो उस केस में ये मेरा क्या होगा? ये मेरा बेस होगा जहां पे थीटा रेस्ट कर रहा है, और ये मेरा क्या होगा? दिस वन विल बी माय परपेंडिकुलर. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? एवरीवन क्लियर? श्याम क्लियर? इकिया क्लियर? पार्थ क्लियर? एवरीवन क्लियर with this or not? Everyone got this? Manikant, what about you? Pratham, what about you? Maybe Robin, what about you? Everyone guys, come on, tell me, are we clear with this? You got the point? ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपनी कहानी को यहाँ पर बता सकते हैं. Got it? Make sense to you? चलो आगे बढ़ते हैं. Which means यहाँ पर क्योंकि मेरा एंगल ये है, इसीलिए in this case I will say AC is my hypotenuse. AC will be my hypotenuse here as well. Here also AC is my hypotenuse. Talking about this, AB is what? AB is my base and BC is my perpendicular. Am I clear? यहाँ की बात करूँ तो AB will be what? AB will be my perpendicular and BC will be my base. ठीक है? Everyone, yes, soon we'll be having some questions as well. Sham, everyone clear with this or not, guys? Everyone got this clear? Make sense to you? This is how I can simply talk about this particular कहानी. अब चलते हैं आगे. Now guys, here enters your trigonometry. Here we have the trigonometry that we are going to talk about. Everyone please focus. This is your trigonometry. So in trigonometry I have 6 trigonometric ratios that you can see over here. Those 6 trigonometric ratios are what I'm writing each and every one for you. First trigonometric ratio is sine, and we popularly write it as only sine. Second trigonometric ratios is cosine, and we popularly write it as cos. Third trigonometric ratio is tangent, but we popularly write it as tan. सिर्फ tan लिखते हैं. Fourth trigonometric ratio is your cosecant, but we popularly write it as only cosec. Next trigonometric ratio is secant, and we always write it as sec. And similarly, next trigonometric ratio that we have is cotangent, and this is popularly known as cot. How many of you are clear with this? So always remember, this sine will be known as sine, this cosine will be known as cos, this tangent will be known as tan, this cosecant will be known as cosec, this secant will be known as sec, and this cotangent will be known as cot. Everyone clear with this or not? इस तरीके से हम लोग इनको names देते हैं. Okay, so every time we will be talking about sine, cos, tan, cosec, sec और cot. कभी भी हम लोग इनको साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट नहीं बोलेंगे. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली में होते क्या. नाउ फोकस. नाउ गाइस, व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज दिस. This is what I am having a triangle over here. I hope all of you can see this, right? In this triangle, this is your 90-degree angle, and this is my A, not A. This is my A, B, C. Am I clear? अभी तो हमने बात ही नहीं करी, पहले देख तो लो. Now, I'm talking about this angle right now. जब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो can you tell me perpendicular क्या होगा, base क्या होगा और hypotenuse क्या होगा? It's a very simple way, guys. 90 degree के opposite वाला side, this will always remain your hypotenuse. Because I'm talking about what? Because I'm talking about this angle, so this will be my base. And इसका opposite वाला side, this side will be what? This will be my perpendicular. Everyone got this? Everyone clear with this? This is how I'm going to define my hypotenuse, base and perpendicular. ठीक है भाई? Got it? Next session we will be having on triangle, Sham. Now, यहाँ पर guys, if I want to find out my sine of A, so your trigonometric ratios may it be sine or may it be cos or may it be tan or may it be cot. All these trigonometric ratios are defined for what? They are defined for your angles.
तो मैं हमेशा लिखूंगा साइन ऑफ ए एंगल या साइन ऑफ सी एंगल, मैं हमेशा एंगल्स की बात करूंगा। तो अगर मुझे साइन ए की बात करनी हो तो ऑलवेज रिमेंबर गाइस दैट साइन इज व्हाट, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एवरीवन फोकस, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? साइन इज इक्वल टू व्हाट, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप मुझे बताओ कि जब मैं ए एंगल की बात कर रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है? आपने अभी बोला दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ए माय परपेंडिकुलर इज बीसी, सो आई विल बी हैविंग बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, एसी, सो योर साइन ए इज व्हाट, योर साइन ए इज बीसी अपॉन एसी। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? टेल मी guys, everyone got this or not? Are we clear with this? You got it? Sine A is what? Sine A is equal to BC upon AC. Are we clear with this or not? Got it? ठीक है। इसी तरीके से गाइज अगर मैं बात करूं अपने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, सो लेट्स से नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट cos. If I want to define my cos of A, what will be my cos of A? Everyone focus. Cos is always equal to base अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस आपको यही दो रिलेशन याद करने हैं, बस आपको यही याद करना है, बाकी सारे जो होंगे, बाकी जितने भी हैं आपके tan, cosec, sec, cot, वो सब इनसे निकल आएंगे। So you just need to remember two trigonometric ratio that sine is perpendicular upon hypotenuse. I'm going to tell you, hold on, I'm going to tell you, sine is perpendicular upon hypotenuse and cos is base upon hypotenuse. That's all. Are we clear? You got it? Sine is perpendicular upon hypotenuse and cos is base upon hypotenuse. What is cos? अगर यहीं से cos लिखूंगा, base is AB. Base आपका क्या है? Base आपका AB है. And when your base is AB, what you can say? Your cos A your cos A will be what guys? Base is AB, so you will write AB over here, upon you have hypotenuse that is AC, तो cos A आपका कितना होगा? AB upon AC होगा। ये बात किस किस को क्लियर है? पहले मुझे फटाफट से बता दो, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? किस किस को साइन A और cos A क्लियर है? फटाफट से मुझे बताओ। Everyone clear with this or not? Sham clear? What about others? Okay, cool. Let's move forward. Okay. Okay, cool. Now, guys, the next thing that I'm talking about is 10. What will be your 10? So now, when you are talking about your 10A, always remember 10 is equal to sine upon cos. 10 is what? 10 is equal to sine upon cos. If you want to write down your 10A, 10A will be what? 10A will be equal to sine A upon cos A. जब 10A आपका sin A upon cos A है, तो sin A अभी अभी आपने क्या लिखा है? sin A को अभी अभी आपने लिखा है BC अपॉन, या फिर इस तरीके से नहीं लिखते हैं, पहले हम लोग इसको बेसिक तरीके से समझते हैं। साइन ए को अभी अभी आपने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मींस पी, हाइपोटेनस अपॉन इज एच। अपॉन कॉस ए को अभी अभी आपने लिखा है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस तो आपको क्या मिलेगा? देखो, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस यू विल बी हैविंग पी अपॉन एच इनटू एच अपॉन बी, एंड यहां से एच एंड एच कैंसिल, यू विल बी हैविंग व्हाट? दिस विल बिकम पी अपॉन बी। और इसीलिए हम लोग कहते हैं टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात करूँ, परपेंडिकुलर इज व्हाट? परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB, सो योर 10A or tangent A will be equal to perpendicular upon base, that is BC upon AB. How many of you are clear with this? Got it? Everyone clear with this or not, guys? Please tell me. You got the point?
I'm repeating everything what I've said till now. Please understand. I'm talking about a triangle over here. In this triangle, I'm saying that let's say this is my angle A, this is B, this is C, this is 90 degree. When I'm having this over here, this will be hypotenuse, this will be base, and this will be perpendicular. जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, when I'm talking about this, you need to understand one thing. वो क्या है? आपको ये बात समझनी पड़ेगी. Hold on. That if you want to write down your sine of A, your sine A will be perpendicular upon hypotenuse, that is BC upon AC. Okay, your cos A will be what? Your cos A will be, yes, you too, Shyam, your cos A will be base upon hypotenuse, that is what? AB upon AC. Clear? And your tan A is what? Your tan A is equal to sine A upon cos A, that will be equal to P upon H upon B upon H, that is equal to P upon B, and this P upon B will be equal to BC upon AB. How many of you got this? ये बात सबको क्लियर है भाई? अभी तक सबको सब समझ में आ गया क्या बोला मैंने, कैसे बोला? Got it? अब चलते हैं जरा आगे. Let's move forward. Now guys, the next thing that I'll be writing is my cosec. Always remember cosec क्या होता है, देख लो इधर. Cosec A is equal to 1 upon sin A. Sec A is equal to what? Sec A is equal to 1 upon cos A. And cot A is equal to what? Cot A is equal to, my god, cot A is equal to 1 upon tan A. किस किस को ये बात क्लियर है भाई? How many of you got this? Cosec A is equal to 1 upon sin A, sec A is equal to 1 upon cos A, and cot A is equal to 1 upon tan A. अब मेरी बात सुनो. Sin A was what? Sin A was 1 upon sin A was perpendicular. Sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. ठीक है? यहाँ पर अगर मैं cosec A निकालूं, cosec A is 1 upon sin A, which is 1 upon perpendicular upon hypotenuse, and this will become hypotenuse upon perpendicular. Similarly, if I am talking about sec A, that is equal to 1 upon cos A. Cos A is B upon H, so 1 upon B upon H, and this will be equal to H upon B. Similarly, tan A is equal to P upon B. 1 upon P upon B is equal to B upon P. How many of you got this? Please tell me guys quickly. फटाफट से मुझे बताओ किस किस को ये समझ में आ गया. How many of you are clear with this? Hello Kaustav Kashyap, how are you? Make sense to everyone, yes or no? Okay, so now I'm repeating everything again. मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम फटाफट मस्त तरीके से. This is the last time we are having this discussion. This is my triangle that I'm talking about. In this triangle, I am saying this is A, B, and C. This is the angle that I'm talking about. This is 90-degree angle. I'm repeating last part. This is your hypotenuse. This is your base. And this is your perpendicular. Okay? From here, if I write down my sine of A, please focus. My sine A is perpendicular upon hypotenuse. That is equal to what? That is equal to BC upon AC. If you want to write down your cos of A, cos A is base upon hypotenuse. That is equal to what? That is equal to AB upon AC. If I want to write down tan of A, tan A is equal to what? Sine upon cos, which is equal to what? Sine is nothing but what? Sine A upon cos A. तो ये आपका आएगा P upon B, and P upon B is BC upon AB. Clear? Got it? Make sense? Now moving forward, अब इसी से अगर मेरे को आगे बढ़ना है और यहाँ पर मुझे लिखना है अपना अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cosec A.
What is cosec A? Cosec A is equal to 1 upon sine A. 1 upon sine A means what? H upon P, or H upon P means what? BC upon, sorry, it means H upon P, and H upon P means AC upon BC. How many of you are clear with this? I'll tell you that at the end of the session, Sham. Are we clear with this, guys? You got it? This is what I'll be writing, yes or no? Everyone clear? तो अगर ये किसी को दिख नहीं रहा हो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने cosec के सबसे एंड में लिखा है AC upon BC. H upon P means what? H upon P means AC upon BC. Got this? समझ में आ गया? ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़े? Now, next thing is sec of A. If you want to find out sec of A, sec A is 1 upon cos A. 1 upon cos A is what? It is nothing but H upon B, and H upon B is what? H upon B is nothing but, इसको उल्टा लिख लो, AC upon AB. Clear? Got it? Everyone clear with this or not, guys? Come on, tell me. फटाफट से मुझे बताओ clear है या नहीं? Are you getting this or not? Everyone clear till here? Everyone got this till this point? ठीक है? Now next thing is what? अब यहीं से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो next thing मुझे लिखना है cot A, and I told you cot A is what? Cot A is equal to 1 upon tan A, which is nothing but what? Which is nothing but B upon P, and that is equal to AB upon BC. ठीक है भाई, क्लियर है? गॉट दिस? ये मेरे पास फाइनल कहानी आ जाती है मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की. ये मेरे को क्लियर है अभी तक? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस, गाइस? कम ऑन, टेल मी. एवरीवन गॉट दिस? एवरीवन क्लियर विद दिस और नॉट? यू गॉट इट? ठीक है, कूल. चलो अब चलते हैं आगे. इसकी बात बाद में करेंगे, इसकी भी बाद में करेंगे. अच्छा, चलो लेट्स टॉक अबाउट नाउ योर एग्जाम्पल नंबर 1. अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, गाइस? द एग्जाम्पल इज सेइंग टू मी दैट व्हाट आई एम हैविंग ओवर हियर, the example is saying that I am having 10a, and this 10a is given to me as 4 upon 3. This 10a is given to me as 4. अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से. अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करूं, आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है यहाँ पर, एंड इन दिस ट्राइंगल मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एंगल A है, दिस इज B 90 डिग्री, एंड दिस इज C. यहाँ पर इफ आई एम सेइंग दैट आई वांट टू फाइंड आउट 10A, हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट 10 इज इक्वल टू व्हाट? 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट? which means 10A is equal to what? 10A is equal to BC upon AB, correct? 10A is equal to what? 10A is equal to BC upon AB. Got this? Am I clear with this? इसमें अगर मैं बात करूं BC upon AB की, तो मान लो BC आपका 10 है और AB आपका 15 है, तो ये आपका रेशियो कितना आएगा? 10 upon 15, that is equal to 2 upon 3. Everyone got this? Clear है सबको? Yes or no? Got it? Now अगर मैं इसी चीज को एक और तरीके से बोलूं कि नहीं नहीं, ये आपका 10 और 30 नहीं है, ये आपका 10 और 15 नहीं है, ये आपका है 20 और ये आपका है 30. In that case you will say, sir, it is now 20 upon 30, again it is equal to 2 upon 3. Yes or no? फिर मैं आपसे बोलूं no no no, it's not 20, it's not 30, it's 40 and it's 60. Got it? So now you will say, sir, it is going to be 40 upon 60 and that is 2 upon 3 again. You got it? तो गाइज अगर आप एक चीज देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट? दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि भले ही आपके लेंथ अलग अलग हैं, जब आपके पास लेंथ जो था वो कितना था? जब आपके पास लेंथ 10 और 15 था तब भी रेशियो 2 अपॉन 3 आया, जब लेंथ 20 और 30 था तब भी रेशियो 2 अपॉन 3 आया, और जब लेंथ आपके पास 40 और 60 था तब भी आपका रेशियो 2 अपॉन 3 आया. यस और नो? एवरीवन गॉट दिस? क्लियर? मेक सेंस?
यानी कि जब मैं रेशियो की बात कर रहा हूं तो रेशियो से मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो मुझे यहां पर मिल रहा है ये एग्जैक्ट मेरा मेजर है परपेंडिकुलर का या बेस का। आई कैन नॉट से दिस, क्योंकि ये जो है आपका अलग भी हो सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेरे को रेशियो दे रखा होता है, व्हेनेवर आई हैव बीन गिवन द रेशियो, ओके एवरीवन प्लीज फोकस व्हाट आई एम सेइंग। Whenever I have been given the ratio, so guys please focus, here it is given to me that 10a is equal to what? 10a is equal to 4 upon 3. I know that 10 is what? Perpendicular upon base, so I will write perpendicular upon base is equal to 4 upon 3. And now what I will say, I will write down, let the what? I will say let the common ratio be x. I will say let the common ratio be x, and then I will say that from there I can say perpendicular is what? Perpendicular is equal to 4x, and base is what? Base is equal to 3x. How many of you are clear with this? Come on, tell me guys. How many of you got this? Everyone. Shyam clear or not? Ikaya clear or not? Everyone. Kostav clear or not? Pratham, what about you? Everyone guys, come on, tell me. Are we clear with this or not? You got it? You got this what I'm saying till here? Make sense to you? I assumed my common ratio to be x, so now I can say my perpendicular is 4x, my base is 3x. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कॉमन रेशियो k मान लिया है, आप k भी मान सकते हो, मैंने x माना, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ये है तो दैट विल बिकम 4x, और बेस ये है तो दिस विल बिकम 3x. गॉट दिस? एवरीवन क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर पाइथागोरस थ्योरम गाइस? I guess every one of you remember Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, you can say that if this is a right angle triangle, this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base, so you can say AC square is equal to hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Yes or no? How many of you are clear with this? Are we clear with this or not, guys? Please tell me, everyone out there. Can I say this now? Can I say that my AC square will be equal to AB square plus BC square? Yes or no? How many of you got this? Got the point? Clear? Now let's move forward. From here, I will be saying that my AC square is equal to AB square is what? AB square is 3x whole square, that is 9x square, plus BC square is what? 4x whole square, that is 16x square. This will give you AC square is equal to 25x square. When AC square is 25x square, from here you can say AC is equal to 5x. Yes or no? ये बात किस किस को समझ में आती है? How many of you are clear with this? What about others? Sham, are you clear with this or not? Please tell me. Everyone clear, guys? Everyone else, are we clear with this? You got it? Correct? Cool. Okay, so this is how I can talk about this. Now guys, if you see, this has come out what? This has come out as 5x. Now I'm removing everything. Let's remove this. Let's remove this, this. Now guys, you tell me, if I want to write down the other trigonometric ratios now, जो कि मेरा question है, that find the other trigonometric ratios. लिखते हैं एक एक करके. Sin A की बात करते हैं पहले. You tell me what is sin A? Sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular क्या है मुझे बताओगे? Perpendicular is nothing but 4x and hypotenuse is nothing but 5x. Which means your sin A is what? Which means your sin A is equal to 4x upon 5x. Which means your sin A is what? Your sin A is equal to 4 upon 5. Everyone got this or not? You clear with this? Got the point?
यहाँ से आपने साइन ए निकाला जो आया 4/5। इसी तरीके से इफ यू वांट टू फाइंड आउट योर cos a, your cos a will be equal to what? Cos a will be equal to base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse will be what, guys? From here you can say your base is 3x upon your hypotenuse is 5x, so you can say this will come out as 3/5. Are we clear with this or not? You got it? Make sense? Similarly, what I can say that my tan a will be equal to what? My tan a will be equal to sin a upon cos a बोल सकते हो, या perpendicular upon base बोल सकते हो. ये कितना हो जाएगा? Perpendicular is what? 4x upon base is what? 3x. This will be equal to 4/3. Clear? Got it? और ये तो हमें already given है. What is 5/4? Now, if I want to find out cosec a will be what? Cosec a अगर आप देखोगे तो cosec a कितना होगा, guys? Let's talk about cosec a. Cosec a will come out as 1 upon sin a. Sin a is 4/5. 1 upon 4/5 will be what? It will be 5/4. Are we clear? This is your cosec a. If you want to find out your sec a from here, your sec a will be equal to 1 upon cos a. Cos a is nothing but 3/5. 1 upon 3/5 is 5/3. Are we clear with this? You got it? Makes sense? So from here I can say that your sec a will be equal to what? Sec a will be equal to 5/3. Correct? Now, अब अगर मुझे cot a find करना होगा, guys, तो cot a will be what? Cot a will be equal to what? Cot a will be equal to 1 upon tan a. Tan a है 4/3, तो 1 upon 4/3 will be 3/4. You got this or not? ये बात किस किस को क्लियर है यार? प्लीज मुझे बता दो फटाफट से. Everyone got this or not? Everyone clear with this or not? Right? So this is how I can talk about this particular question, in which I'm assuming that my tan a gives me that perpendicular is 4x and base is 3x. Everyone got this or not? Everyone clear with this or not? Correct? Got it? This is how I can talk about this particular question. Cool. Let's move forward. Now, guys, this is the value. These are the values that we are having. सारी values जो हमने देखी वही सारी values आपको यहाँ पे given है. If you see, okay. Now, this is the next question, guys, that I am having. So angle B and angle Q, दो एंगल की बात कर रहे हैं, B और Q की, और ये हमारे एक्यूट एंगल है. ये एंगल और ये एंगल दोनों एक्यूट एंगल हैं. Such that sin B is equal to sin Q. Sin B जो है, ये sin B is equal to sin Q है. ठीक है? Sin B is equal to क्या है? Sin Q है. हमें प्रूव करना है कि एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा. Got the point? हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा. ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? चलो, अब मेरी बात ध्यान सुनो. आई गेस यू ऑल मस्ट हैव कवर्ड योर सिमिलर ट्राइंगल्स. आप लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स कर लिया होगा ऑफ क्लास 10th. यू ऑलरेडी नो नाउ कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ दो सिमिलर ट्राइंगल्स की, सो इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स ऑल द रेस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल. यस और नो? आर यू क्लियर विद दैट? वो क्लैरिटी है नहीं है? प्लीज टेल मी. Everyone clear with similar triangles, guys? Everyone out there? Now focus. In these two triangles, what I'll say, I will simply say that when I'm talking about my first triangle, in my first triangle, I can say that my sin B is equal to what? My sin B is equal to perpendicular upon hypotenuse. That is nothing but AC upon AB. Clear? ये आ गया मेरा sin B. इसी तरीके से if in the next triangle I find out my sin Q, my sin Q will be equal to perpendicular upon hypotenuse, that is PR upon PQ. Am I clear? Now, जब मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, मतलब ये और ये इक्वल हैं. जब ये और ये इक्वल हैं तो आई कैन क्लियरली से दैट ए बी अपॉन सॉरी I can clearly say what? I can clearly say that AC upon AB is equal to what? I can say that AC
अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अभी क्लियर विद दिस? क्लियर? हेलो यश प्रसाद, हाउ आर यू? गॉट इट? ठीक है, ए सी अपॉन ए बी जो है वो पी आर अपॉन पी क्यू के इक्वल है। गॉट द पॉइंट? अगर मैं बोल रहा हूँ साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू दिस। गॉट इट? These two will be equal as well. Make sense? Which means AC upon AB is equal to what? AC upon AB is equal to PR upon PQ. Got it? ये मेरे को यहाँ से मिल गया। अब चलते हैं आगे। Now, मुझे प्रूव करना है कि B एंगल Q के इक्वल है। देखो कैसे करेंगे, बात समझो। Now, when I am saying AC upon AB is equal to PR upon PQ, मैंने मान लिया कि ये जो है एक K वैल्यू के इक्वल है, मतलब रेशियो कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने इस रेशियो को नाम दे दिया, द नेम ऑफ दिस रेशियो इज के। आई एम राइटिंग से मीन्स लेट। से का मतलब होता है लेट, मानना, एज्यूम करना। सो आई अज्यूम दैट दिस रेशियो इज इक्वल टू के। अब बात सुनो, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द अदर टू साइड्स, देखो ए सी ए बी पी आर पी क्यू, आई हैव ए सी ए बी पी आर एंड पी क्यू। इन चारों साइड को पहले से ही इन्वॉल्व करके मैं चल रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्विंग दीज फोर साइड्स एंड आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दीज फोर साइड्स, ए सी ए बी पी आर एंड पी क्यू। अब मेरे पास बचता है बी सी एंड आर क्यू। अब मैं बात करने वाला हूँ बी सी और आर क्यू की। सो लेट्स टॉक अबाउट बी सी एंड आर क्यू। नाउ फ्रॉम हियर गाइज, इफ आई विल फाइंड आउट माई बी सी, व्हाट विल माई बी सी बी? इफ यू सी, योर बी सी विल बी इक्वल टू व्हाट? योर बी सी विल बी इक्वल टू, yes you can take as x, your bc will be equal to what? Your bc will be equal to under root of ab square minus ac square. Yes or no? Everyone clear with this? Got the point? ठीक है, cool. Similarly, if you write down your rq, your rq will be what? Your rq will be equal to under root of, लिख लो यहाँ पे क्या होगा, rq is pq square minus PR square. Am I clear with this or not? You got this? Everyone clear with this? Your BC is what? Your BC is root of AB square minus AC square. And your RQ is what? Your RQ is root of PQ square minus PR square. ये आपके पास आपका क्या आ गया? This is what you have, your BC and your RQ. Correct? No. अब हम यहाँ पर आ गए. This is your BC, what we have written, and this is your RQ or QR. Now, if I take the ratio of BC upon QR, अगर मैं यही रेशियो लूँ तो BC upon QR will be equal to root of AB square minus AC square upon root of PQ square minus PR square. This is what I'll be getting, yes or no? This is what I'll be getting. Now here if you focus, just a minute guys. Here if you focus, this is what you have. Now, focus. From here, when you are saying that AB upon AC is equal to PR upon PQ, मेरी बात ध्यान से सुनो. When you are saying that AB upon AC is equal to PR upon PQ is equal to K, जब आपने इसको K मान लिया है, अब मेरी बात ध्यान से देखो. You have AC upon AB is equal to PR upon PQ. You converted this into AC upon PR cross multiplication is equal to AB upon PQ. Got it? And इसको आपने assume करा K. यहाँ से you can find out two things. First is your AC upon PR is K, and second is your AB upon PQ is K. Am I clear with this? You got it? Make sense to you? From here guys, what I can say is this, that your AC will be what? Your AC will be K times PR, and your AB will be what? Your AB will be K times PQ. Am I clear with this or not? You got it? Make sense to you? Correct? From here, your AC will be what? Your AC will be K times PR, and your AB will be what? Your AB will be K times PQ. ठीक है? इसी वैल्यू को AC is equal to KPR and AB is equal to KPQ को मैं यहाँ पर पुट करूँ. So I am putting this AB as what? I am putting this AB as what? I am putting this AB as KPQ. So AB square will be what? AB square will be KPQ whole square, which means K square PQ square. How many of you got this? Clear? AB square का मतलब K times PQ whole square.
And similarly, this AC square will mean what? This AC square will mean K PR ka whole square, which means K square PR square. Am I clear with this or not? You got it? Make sense to you? Now understand. Now guys, when I will be solving this, what will happen? Please focus everyone. When I will be solving this, moving forward, this will further be written down as what? देखो मेरी बात समझो. You will be having under root k square pq square minus pr square, correct? Root के अंदर ही आपने k को कॉमन लिया. Now because you have k square, this can come out in the form of k. तो आपके पास finally आ गया root of pq square minus pr square अंदर ही है और बाहर आपके पास है k, something like this, कुछ ऐसा. Are we clear with this? You got it? यहाँ से आप ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एंड आपके पास फाइनली बचेगा के. यानी कि अगर आप देखो तो आपके पास ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के था, और वही सेम आपका बी सी अपॉन क्यू आर भी आ गया. आर वी क्लियर? So now finally what you can say is this, if you focus guys, now finally what you can say is this, that you have AC upon PR is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to K. Am I clear with this or not? And now guys, अगर आपको याद हो तो in your similar triangles you must have gone through that when the ratio of the corresponding sides are same for two triangles, then those two triangles are said to be similar. वो दो triangles क्या कहलाते हैं? Those two triangles are said to be similar. और जब दो triangles similar होते हैं, so when I am saying that this triangle ACB, when I am saying triangle ACB is similar to triangle PRQ, I can say that angle A will be equal to angle B. होगा ही होगा. And I can also say that angle B will be equal to angle Q and angle C will be equal to angle R. This always happens. This always happens. When two triangles are similar, what do we say? When two triangles are similar, we say that their corresponding angles will be equal. Are we clear with this or not? And hence we have proved it that angle B is equal to angle Q. Are you clear with this or not? How many of you got this? Please tell me guys, are we clear with this or not? You got this? Ekakia, I don't know how to pronounce your name. Elakia, are you clear with this? Yash Prasad, what about you? Everyone got this, right? So guys, that's how we can talk about these questions that we have. That's how we can discuss all these things. Baki, that is all from my side. Thank you so much for being here, guys. Now we will be meeting in the next course that you can see over here. This is the next class. The next class that we will be having, that will be on coordinate geometry. On YouTube, we will be having our next class on coordinate geometry, and that will be on 12th of August at 1 p.m. So at 1 p.m. on 12th of August, we will be meeting for our next class that will be on coordinate geometry. Till then, goodbye, take care, have a great day, and also please do not forget to subscribe to Unacademy Plus so that you can attend classes, live classes every day. If you are planning to subscribe to Unacademy Plus, you can use my code SG08 to get flat 10% discount on their subscription charges. And with this note, I say a goodbye to all of you. Take care. Have a great day, guys. Have a great weekend. I will be seeing you in the next class. Till then, may God bless you and all the very best to you. Okay, bye.